बुलेटिन में खुश आमदीद। और खबर देंगे आपको, नेपाल में जलजले से भारत लरज उठा। जलजले की शिद्दत 6.2 जबकि गहराई 5 किलोमीटर थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक जलजले का मरकज नेपाल था। नई दिल्ली में भी झटके महसूस किए गए हैं। जयपुर, लखनऊ और दीगर शहरों में भी जलजला महसूस किया गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। हरियाणा, आसाम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आफ्टर शॉक्स भी आए। गुज़श्ता रोज डच साइंसदान ने 48 घंटे में जलजले की पेशगोई की थी। नेदरलैंड्स के सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे ने चमन की फॉल्ट लाइन को इंतहाई ताकतवर जलजले का रीजन करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में आइंदा 2 रोज में ताकतवर जलजला आ सकता है, जिसकी शिद्दत 6 या उससे जायद हो सकती है। डच साइंसदान ने इससे कबल तुर्की, उर्दन, शाम और लबनान में भी जलजले की पेशगोई की थी, जो दुरुस्त साबित हुई। एपेक्स कमेटी इजलास नेशनल एक्शन प्लान के तहत गैर कानूनी गैर मुल्कियों से मुतालिक अहम फैसला। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का हतमी फैसला कर लिया गया। जराये के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को निकालने के लिए हतमी डेडलाइन देने का इम्कान है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की मुतवक्के डेडलाइन तक असासे फरोख्त और अपने वतन वापसी के पाबंद होंगे। डेडलाइन खत्म होने पर गैर मुल्कियों को मुल्क बदर और जायदादें जब्त कर दी जाएंगी। अफगान शहरी कानूनी तौर पर इजरा करदा डिजिटाइज्ड ई तस्कीरा पर ही पाकिस्तान का सफर कर सकेंगे। पाकिस्तान में सिर्फ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन के हामिल अफगानी सकूनत के अहल होंगे। कानूनी वीजा के हामिल अफगान शहरी भी पाकिस्तान का सफर करने के अहल होंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुमकिन डेडलाइन तक अपने मुल्क जाना होगा। फौजी आमर हो या कोई और, फर्दे वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों के समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा हम पाकिस्तान से खिलवाड़ होने नहीं दे सकते। हलफ में आइन के साथ कानून का भी जिक्र है। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं, और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं, फिर वो ओथ भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। वहां भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को। वहां भी पिटिशन लाया करें ना, फर्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो। और फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। मार्शल लॉ डिक्टेटर्स हो जाए या कोई और हो जाए, वो फर्द वाहिद होते हैं, वो इज्तिमाई सोच वाले नहीं होते। वो कहते हैं मैं खुद फैसला करूंगा। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, एक जजमेंट है जफर हादी शाह साहब का, उन्होंने तो एक फर्द वाहिद सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार दे दिया। आप उससे इत्तेफाक करते हैं? आप उससे इत्तेफाक नहीं करते हैं तो ये बड़ा अच्छा कानून नहीं बना है पार्लियामान ने कि हम उसको रिविजिट कर सकें। अगर वो रिविजिट नहीं हुआ होता, आज तक तारीख से शुरू हो जाइए, मौलवी तमीजुद्दीन से शुरू करें, डोसो से शुरू करें, नुसरत भुट्टो की बात करें, जफर हादी शाह की बात करें। उन्होंने पूरे शख्स को कह दिया तुम आइन से जो खिलवाड़ करना चाहो हम आपको दे देते हैं इख्तियार। क्या जजों ने नहीं हल्फ तोड़ा अपना जब उन्होंने ऐसे फैसले किए? आप खुल की बात कीजिए ना। पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें पार्लियामान की कदर करना चाहिए। हमारे सामने एक सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, लोगों के फायदे की बात है या लोगों के नुकसान की। चीफ जस्टिस के फायदे को नहीं। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का रदम करार देने की इस्तदा कर दी। पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए कहा फेडरल कानून साजी लिस्ट के अलावा कोई कानून साजी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने इत्तफसार किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस प्रोग्राम और सोशल मीडिया का भी इस लिस्ट में जिक्र नहीं, तो क्या पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती? Majlis-e-Shura Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. You are saying Parliament does not have power to legislate except items mentioned in the federal legislative list. Yes or no? Yes. And also on what is mentioned in the body of the constitution, and I'll just take your okay, now I will give you an example. Science is developing, artificial intelligence has evolved, outer space, social media. इनके मुतालिक पार्लियामान कानून नहीं बना सकती है क्योंकि इन तीनों चीजों में से एक का भी जिक्र फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में भी नहीं है और आइन की किसी शिक में एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली भी नहीं है। मेरे ख्याल में बना सकती है।
आपने अपना ही सवाल को तोड़ दिया, फिर अपने जवाब को। पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम नहीं शुरू कर सकेगा क्योंकि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में इसका तस्करा नहीं। या तो आप ये आर्ग्यूमेंट करें कि नहीं सिंध कर सकता है, वफाक नहीं कर सकता है, क्योंकि बाकी सारे इख्तियारात फिर सूबों के पास हैं। अगर हम कल शुरू करना चाहें तो आपके मुताबिक हम नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं तो अगर कर सकते हैं तो वो कौन सा पावर पार्लियामान इस्तेमाल करेगा? आपने मकलत वर्सेस मेरीलैंड का केस फिर आप लोग इतने मुतासिर हो गए हैं अमेरिकन, हम आपसे हमारा रिटर्न आइन है उसकी हम बात कर रहे हैं, उनका आइन अपनी जगह है। अगर मैं आपकी जजमेंट जो कि आपने भाई अब जजमेंट को छोड़ दीजिए ना, सिविल एविएशन अथॉरिटी के केस में दी, उसमें आपने आप जरा तसल्ली से बहस करें ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं देते हैं, आप कहते हैं मैरीलैंड वर्सेस उसमें देख लें, भी उसको कम क्यों देखें? माय लॉर्ड, मैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में तो केस तैयार करके नहीं आया, नहीं जी, मैं तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे हूँ, उस पर मैं उस पे बात करें ना, आप ये ब्रॉड स्ट्रोक्स ना पेंट कीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट मैं आपसे कहीं से आप ब्रॉड स्ट्रोक्स जब पेंट करते हैं अपने लिए मसले खड़े कर देते हैं, तो आप फोकस्ड रहें इसी बात पे। ये चलते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट, जहां प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत अभी जारी है। वो अपील तो है ही नहीं, तो पहली बात तो पार्लियामेंट ने दी है, तो अब कहना कि 99% दे दी तो 1% बच गया, तो इसलिए बेकार हो गया, इसलिए खराब है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपका आर्ग्यूमेंट फंडामेंटली फ्लॉड है। आप मेरी बात समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बट ये मेरा आर्ग्यूमेंट है ही नहीं ना जी, मैं ये कर रहा हूँ, मैं फुल कोर्ट पे जा ही नहीं रहा हूँ। मैं फुल कोर्ट में ठीक है, फुल कोर्ट आप बैठ के फैसला कर दें, उसके ऊपर कोई इसका फायदा कुछ नहीं। कॉम्पिटेंस का इशू पहले हल कर लें। मैं एक बिकॉज कॉम्पिटेंस देन वी गेट इनटू दिस क्वेश्चन। मैं तो जी अपना सवाल आ रही है तो जवाब तो देने, फायदा तब होगा ना। मैं एक इसका मेरा एक और फंडामेंटल मैं कह रहा हूँ, आप बताएं this law, your lordships uphold this law for, let's assume for the sake, then the right of appeal is there. Then in every case under 184(3) you have to make provision for leave line 9 judges out so that they can hear an appeal. Therefore the maximum strength of the bench can always be 8 or not more. What will happen in that case to judgments that your lordships have delivered by member 11, member 12, no member appeal. 13 member benches? No appeal. Can you never overrule those judgments then? ओवररूल इज डिफरेंट। देखिए अब आप फर्क में आ गए, My lord, that's- वो अगर हम और केस में articulate my point. My point is that if you are stuck with a maximum 8 or 9 judges in a bench, you can't create a bench larger than 9 in under any circumstances, then you can never overrule larger bench judgments, and that's a curtailment of your... घबराहट क्यों हो रही है अगर राइट ऑफ अपील मिल गई? आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हो सकता है आप फायदे में हो किसी केसेस में, जरूर। फिर आप ये दो जजमेंट्स मैंने दी हैं सर, इनको भी ओवररूल कर दें, प्रोविंस को भी। आपसे मैं पूछ रहा हूँ एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपको फायदा या नुकसान क्या हो? फायदा नुकसान की बात नहीं हो रहा है तो बता दें। We are only, कोई फायदा नुकसान नहीं है, सिर्फ the only concern is that Parliament and my client today it's going through difficult times, but it can be in power again. It can be in power again. The history of Pakistan teaches us this. So even then I am under instructions to say that this is not something that the Parliament should be allowed. ये जो बात आप कर रहे हैं ना, I am under instructions to state, sorry, हम ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इस किस्म के केसेस में you are not under instructions. You assist the court. I can say stand on your head or whatever. I'm not concerned with that. This is not his rights or that party's rights that we're talking about, that you can give instructions. जब आपने ये तय कर लिया है कि कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप ये नहीं कहें साथ साथ I'm under instructions to state. Sorry to say आप मातहत नहीं हैं. You are an officer of this court first and foremost. And in this case, the matter ends there. Doesn't go beyond that. My lord, that goes, your lordship, when I first stood here on the last debate, your lordship asked me a question, who are you with? And I said I'm supporting the petitioners, but with some caveats. That's all I'm saying. That all that I've said, the legal submissions I made are not. In the instructions का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें. I'll take that. But the position is that Parliament does not have power because it
इस कोर्ट पे इसी कमरे में फिजिकल अटैक्स भी हुए हैं, पार्लियामेंट में जो होता रहा। सॉरी प्लीज उसके लिए आप पार्लियामेंट, इसीलिए ये फायरवॉल क्रिएट की गई है अगेंस्ट टू प्रोटेक्ट द जुडिशरी। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। पार्लियामेंट अपने डोमेन में रह के हजार चीजें करे, हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पार्लियामान को भी। जरूर करें, मैं आई एम ऑल फॉर इट। इसीलिए तो मैंने आपको एंट्री 55 में से एक रास्ता देने की कोशिश की है, which goes against what the case law of this court says. Under the constitutional scheme, each organ of the state has been provided power to make its own rules. The judiciary doesn't make the rules of the parliament. The judiciary doesn't make the rules of the executive. The judiciary makes its own rules. Yes, right? Only those rules made by the executive or other organs which are in conflict with the constitution can be looked at by us, and if we find they conflict with the constitution, they have to be struck down. So those three firewalls have been intentionally, deliberately created by the Constitution, and the interest of every citizen of the state is that they remain intact. For this, 55 itself is shrouded in a bit of a mystery, and there are unanswered questions. Yes. Is that right? Yes. Now, assuming that this power to make law under 191 is an enabling power, the subject matter is the practice and procedure of the court. So, could it be said that the power of the court, the rule-making power, in respect of this subject matter, and the power, if this is an enabling power of Parliament to make a law, are coterminous, meaning they extend over exactly the same area? My lord, I would say no, because then once Parliament covers everything, then there is nothing. I'm not saying. What I'm saying is, whatever is the subject matter of the practice and procedure of the court has the power to make rules in that regard. My lord. If law as used in 191 is an enabling power, it operates on the same subject matter, and the area therefore is the same. If it is used as an enabling provision, yes. Then yes. But then if that is so, you have just told us, and quite rightly so, that in exercise of rule-making power, the Supreme Court cannot give a right of appeal. Can't. So therefore, if the two powers are coterminous in respect of the subject matter, my question to you is, how can, if it is an enabling power, how can Parliament use Article 191, because that is what is referred to in the preamble, how can it use that power to confer a substantive right of appeal? How is that possible? It can't. It can't be. So I agree with the comment made by my little brother, but and just adding to that, to the extent of practice and procedure, if we were to take 191 to be an enabling power, then to the extent of practice and procedure, the law is correct. As far as the substantive provision of appeal is concerned, we'll have to look the other way, and then we'll have to look at 55, which, as I had earlier said, is already full of confusion and not very clear. So that's that. But as far as the law and practice and procedure is concerned, if we were to imagine that 191 is an enabling provision, then the law passes the test, the committee and all the other provisions, except the substantive part of appeal, which is still unanswered, and we wait for the others to... My Lord, even that, that's why I added a caveat at the outset that even if it is an enabling provision and enables Parliament to enact a statute for rules and procedure on the basis of 191 itself, it will still be subject to some all overarching constitutional principles. Now, one constitution... No, that's fine. My Lord, allow me to finish this. One overarching constitutional principle, which in my humble opinion, and that's what I've submitted, has acquired the status of a constitutional convention, is the power of the Chief Justice to form benches. Now, I am not for a moment saying that should not be revisited. I'm not for a moment saying that. I'm saying that since that has achieved the status of a constitutional convention, that constitutional convention is being continued by virtue of the provisions of Order 11 of the Supreme Court rules. Therefore,
The Parliament can't undo that, as held by Baz Mohammed Kakar. Your lordships will have to do that in exercise of rule framing power. So after your point, suppose if we were to take 191 to be an enabling power, then we look at the law, and we look at the law, then it has to pass the muster of fundamental rights and all. And yes, I would agree with my learned brother who would refer to my earlier order relating to the committee deciding the thing, which is I'm very clear on that issue. There could be either that has provision, could be, speaking for myself, read down, or we're not sure whether at all they judicially decide this question or administratively decide this question. One would imagine because it's a committee, it is more of an administrative thing. Yes. That's a snag which needs to be rectified, but that's. Yes. Can I just place a conundrum before you, and if you can respond to it? Another one, my lord. This is the first one. This is the first one that directly affects me. Okay. Since everyone is very kind on both sides of me, and all of you are very kind, let's suppose I, in the person of the Chief Justice, become very unreasonable. All my colleagues ask me to call a full court meeting to amend certain rule which requires amendment. Okay, or some other issue. I say, no, I will not do it. So there is, nobody can do anything about it, very bad. So when we talk about, there are two arguments. One is trichotomy of powers. Then within a particular constitutional body like the Supreme Court, well, yes, I can go along with the first one, but then are you also propagating the omnipotency to the Chief Justice, or as used to be criticized, the Lord Chancellor of, and the equity varies with the Chancellor's foot. So suppose I become unreasonable, tough luck to all of you, to everyone in Pakistan, tough luck. Right? No. How will you resolve this? Parliament has said, well, you may not like it, Mr. Chief Justice, but we have made an attempt to resolve it, because you are never going to do it. You are never going to do it. And you are, by your conduct, have shown you are never going to do it. So you can say, no, we must persist on omnipotency to the Chief Justice, the person of the Chief Justice, and he can do no wrong. And let him do, is it democratic? Is it just? Is it forget the Constitution of Pakistan for the time being. I'm talking now of greater concepts like justice and fairness. Does it meet? We talk about Islam, but surprisingly enough, not one person has mentioned Islam here. Does Islam even permit this? आपको हम खबर दें, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तानी शहरी की जानो माल फलाह बहबूद सबसे मुकद्दम है। लईक़ रहमान हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी लईक़, आगा कीजिए। जी, आज के एपेक्स कमेटी के इजलास में तवील और काफी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई तमाम पहलुओं पर, जिसके दौरान आर्मी चीफ की तरफ से ये एक कमेंट सामने आया है और उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। बुनियादी तौर पर ये जो जुमला उनकी तरफ से कहा गया, खुसूसी तौर पर उन गैर कानूनी गैर मुल्की जो पाकिस्तान में मुकीम हैं और गैर कानूनी कार्रवाई में मुलविस हैं, उनके तनाजुर में किया गया, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में देखा जाए तो स्मगलिंग से लेकर हवाला हुंडी और दीगर दहशतगर्दी और दीगर जो क्राइम्स हैं, उनमें गैर मुल्की जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं वो सामने आ रही हैं, उनका मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। तो इस तनाजुर में उनकी तरफ से दो टोक अल्फाज में ये कहा गया कि एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद को हर सूरत में मुकद्दम रखा जाएगा और इस सिलसिले में जो भी उनकी जानो माल और के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं, क्राइम्स कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई को भी यकीनी बनाया जाएगा। और तमाम एपेक्स कमेटी के शुरा का इस बात पर इत्तफाक था कि दहशतगर्दी, क्राइम्स, गैर कानूनी आमदोरफ्त, स्मगलिंग और हवाला हुंडी समेत जितने भी क्राइम्स हैं उनकी रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाइयां की जाएंगी, कानून के मुताबिक फैसले किए जाएंगे और इन तमाम जो लोग हैं, अनासर हैं, इनके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया लईक़ रहमान अपडेट करने के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
اور لاہور میں 4 بچوں کے اغوا اور قتل میں باپ ملوث نکلا. پولیس نے قتل کا سراغ لگا لیا. پولیس کے مطابق باپ نے بچوں کو نہر میں پھینک کر اغوا کا ڈرامہ رچایا اور گرفتاری پر جرم کا اعتراف کر لیا. پنجو گاؤں کے رہائشی عظیم نے 2 دن پہلے اپنے 4 کمسن بچوں کو للیانی نہر میں پھینک کر خود ہی بچوں کے اغوا کے خلاف FIR درج کروائی. پولیس نے جب تفتیش کی تو واردات کا اعتراف کر لیا. پولیس اور ریسکیو ٹیمیں نہر سے بچوں کی تلاش میں مصروف ہیں. نہر میں پھینکے جانے والے بچوں میں 12 سال کا صابر، 9 سال کی سمیہ، 5 سال کی نبیہہ اور 2 سال کی عائشہ شامل ہیں. بچوں کا جو والد ہے جس کا نام عظیم ہے، اس کے ٹوٹل 6 بچے ہیں. ایک اس کا بیٹا بڑا ہے، 3 اس کے 4 بیٹیاں ہیں اور پھر ایک چھوٹا بیٹا ہے. اس نے یہ چیز بتائی ہے سنڈے والے دن شام کو وہ اپنے 4 بچوں کو، جس میں ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں، ان کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے وہ نہر پہ لے کے گیا ہے. وہاں پر انہوں نے کچھ کھایا پیا ہے اور پھر 4 بچوں کو کھڑا کر کے کہ تم لوگوں کی تصویر کھینچ رہا ہوں، بچوں کو 4 کو دھکا دے دیا ہے. تمام کی تمام ٹیمز ان کو ڈیڈ باڈیز ڈھونڈ رہی ہیں، بلکہ ڈاؤن سٹریم جو کینال ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. ایک غیر اخلاقی کام ہے جو یہ باپ کرتا تھا. غیر اخلاقی کام کو کور کرنے کے لیے اس نے اپنے 4 بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے نہر میں پھینک کے مار دیا. تفتیش جاری ہے. کولڈ بلڈڈ مرڈر جس میں اس نے یہ سارا کام کیا ہے ہوش و حواس میں، اور کسی قسم کی کوئی مینٹلی وہ ڈیرینج ہی ہے. سائفر کیس میں چیئرمین PTI کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہی ہوگا. وزارت قانون نے سماعت جیل میں کرنے کا NOC جاری کر دیا. خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے وزارت قانون کو جیل ٹرائل کے حوالے سے خط لکھا تھا. وزارت قانون نے کہا انہیں چیئرمین PTI کے خلاف سائفر کیس کے جیل میں ٹرائل پر کوئی اعتراض نہیں. اڈیالہ جیل میں گنجائش سے زیادہ قیدیوں کو رکھا ہوا ہے. چیئرمین PTI کے پاس اتنی بھی جگہ نہیں کہ وہ اپنے پاؤں سیدھے کر سکیں. سردار لطیف کھوسا کہتے ہیں بشنا بی بی کی درخواست پر آج سماعت ہوئی. چیف جسٹس نے پوچھا درخواست میں آپ کی استدعا کیا ہے. چیف جسٹس کو بتایا چیئرمین PTI کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں. وائف ہیں ان کی جانب سے پٹیشن تھی یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دفتر میں اعتراضات لگائے تھے کہ اعتراضات آج چیف جسٹس صاحب نے مسترد کر دیے آفس کی، اور پرسوں کے لیے انہوں نے مین پٹیشن کو لگایا ہے. چیف صاحب نے پوچھا کہ آپ کی چاہتے کیا ہیں اور پریئر کیا ہے، تو اس میں میں نے بتایا کہ محترم عمران خان صاحب کی جو ہے زندگی کو خطرہ ہے. جیل میں جتنی کیپیسٹی ہے اس سے دوہرے سے بھی زیادہ یہاں پرزنرز کو رکھا گیا ہے. اسپیس اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں اپنے سیدھے کر سکتے. کل بھی جو ہے محترم عمران خان صاحب کو انہوں نے اس سیل سے نکال کے ایک چھوٹے سیل میں رکھ دیا ہے اور باہر بڑا سخت قسم کا ایک پیرا لگا دیا ہے. بشرا بی بی کو یہی خطرہ ہے کہ یہ جو ہے اس انداز سے، چونکہ پولیٹیکل گراف تو محترم عمران خان صاحب کا یہ منہدم کر نہیں سکتے ہیں. کیئر ٹیکرز کا تسلسل ہے محترم PDM کی جو حکومت ہے صاحب کا. لندن سے وہ فرماتے ہیں 21 کو ٹکٹ لے لیے اور پتہ نہیں کیا ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور جب یہاں جلسہ کرتے ہیں وہ جلسی ہے اس میں بھی نعرے لگتے ہیں چور چور کے. جو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی خواہاں ہیں اور کہتے ہیں لکھ لو کہ میں بنوں گا، وہ ان کو احساس جا رہا ہے لوگوں کا یہاں سے کہ جناب آپ کو تو لاہور میں بھی ایک سیٹ نہیں ملنے والی ہے. بھی فرار ڈھونڈ رہے ہیں. بند کر دوں گا، اس کو پکڑ لوں گا. اس چیز نے تو ہمارا بھٹا بٹھایا ہے. جنہوں نے ہمارے عقائد کے ساتھ تجاوز کیا وہ ہمیں بھولے گا نہیں، ہمیں کوئی نام نہیں بھولے گا. فکر نہ کریں، وقت آنے پر معاملات سیٹل ہوں گے. نون لیگ کے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں میاں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے قانونی ٹیم تیاری کر رہی ہے. دوں گا، میں اس کو بھی پکڑ لوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ اگر 3.5 سال اس ملک میں نہ ہوتا تو آج ہم اس مصیبت میں بیٹھے ہوتے. جنہوں نے ہمارے ساتھ یا ہمارے قائد کے ساتھ یا ہماری جماعت کے ساتھ تجاوز کیا ہے، کوئی نام ہمیں نہیں بھولے گا. یہ آپ فکر نہ کریں. آنے پہ جو ہے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوں گے. لیکن اس وقت میاں نواز شریف اگر قوم کے لیے امید لے کے نہیں آئے گا، اور ہم بھی وہی گردان جو 4.25 سال سب کو پکڑ لیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اسی کے اوپر لگ جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے بھی اور ملک سے بھی زیادہ. میاں نواز شریف صاحب پروٹیکٹیو بیل کے متعلق سارے انتظامات ہماری لیگل ٹیم نے جو ہے وہ پوری تیاری کر لی ہے. پروٹیکٹیو بیل لے کے انشاءاللہ آئیں گے اور ریسیپشن کے بعد وہ عدالت کو سرنڈر کریں گے.
ہم بالکل خاموش نہیں ہیں. ہم نے بھرپور انداز میں یہ مطالبہ کیا کہ الیکشن جو ہے جتنی جلد ہو سکے وہ کروائے جائیں. ہمارا مطالبہ تھا اور اس کے اوپر فروری سے جنوری تک اس کو محدود کیا گیا. پیپلز پارٹی نے پنجاب میں ہمارا مخالف ووٹ جو اس کو اٹریکٹ کرنا ہے, تو وہ اگر ہمارے ساتھ اس قسم کی گفتگو نہیں کرے گی, ہمارے خلاف باتیں نہیں کریں گے, کس طرح سے اٹریکٹ کریں گے؟ انہیں سیاسی طور پہ جو ہے وہ جو سوٹ کرتا ہے وہ انہیں کہنے دیں. استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں. لیگی رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں چوتھی بار میاں نواز شریف وزیر اعظم بننے وطن آ رہے ہیں. وزیر اعظم بننے نواز شریف واپس آ رہا. تمام نواز شریف کے ورکرز جو ہیں وہاں پہ پہنچیں گے. 21 اکتوبر کو جلسہ ہے یا یادگار پاکستان پہ اجتماع میں شرکت کریں گے. اس جلسے کے بعد شکوک و شبہات کی گنجائش انشاءاللہ تعالی نہیں رہے گی. آباد جو ہے جنوری میں 25 اور 28 جنوری کی تاریخ بھی سامنے آ چکی. حلقہ بندیاں جو ہے وہ اناؤنس ہو گئی. اس کے بعد الیکشن شیڈول اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گی. میاں نواز شریف جب شرف نے ان کو جلا وطن کیا, پتا تھا کہ میں نے قید ہونا ہے, پتا تھا کہ بیٹی نے قید ہونا ہے, لیکن وہ پھر واپس. میں سمجھتا ہوں کہ دو آلریڈی مثالیں جو ہے میاں نواز شریف کی ذات کے ساتھ جو ہے وابستہ ہیں.